हम कौन है, हम क्या है, दुनिया को दिखाएंगे। रोके जो पर्वत भी हमें कब रोक पाएंगे। धन धना धन धन धना धन धन धना धन धन धना धन। Alright, so before we get started, I want to talk about the One Football app, which is my go-to football app for all of my footballing needs. To be very honest, if I have to know about any news about my favorite teams, my favorite leagues, I will go to the One Football app. It contains lineups for all of my matches. It also gives me updates about my favorite players, by the way, because all you have to do is just click on the bell icon on top of your favorite players and you will get real-time updates about when they score a goal, when they give an assist, or when they are involved in a team which wins a particular game. So what are you waiting for? Just download the One Football app from the link in the description below. Hello guys, this is Aidev Guru Gyan. Welcome to another video. And मैंने ये वीडियो एक्चुअली रिकॉर्ड की थी कल रात को 4 बजे। मैं सोच रहा था कि मैंने रिकॉर्ड की है कल रात को 4 बजे, पर मैंने रिकॉर्ड बटन दबाना भूल गया एंड इसलिए मुझे सुबह को वापस रिकॉर्ड करना है, क्योंकि मैं सोचा कि कल रात को बहुत ज़्यादा नींद आ गई थी, तो मैं सोचा कि सुबह को रिकॉर्ड कर लेते हैं। बट व्हाट अ परफॉर्मेंस, व्हाट अ परफॉर्मेंस फ्रॉम बोथ टीम्स, टू बी ऑनेस्ट। व्हाट अ फाइनल। एक जब भी चैंपियंस लीग फाइनल होता है ना, कि आपको मतलब मैंने गोल फेस्ट प्रेडिक्ट किया था, बट मैं बहुत बोल्ड प्रेडिक्शन मैंने उधर की थी, क्योंकि मुझे लगा कि शायद ही चैंपियंस लीग फाइनल भी डिफरेंट देन द रेस्ट। बट आई थिंक इट्स ऑलवेज द केजी अफेयर व्हेन इट कम्स टू चैंपियंस लीग फाइनल्स। आई थिंक तो नेक्स्ट टाइम से प्रॉब्ली इफ एनीवन वांट्स टू पुट मनी ऑन द चैंपियंस लीग फाइनल, दे कैन इजीली पुट इट, मतलब ऑन इट बीइंग, मतलब मैक्स टू मैक्स 2-3 गोल होंगे मैक्स, उससे ज्यादा शायद शायद ही हो, बिकॉज it has it's it is the affair between two of the best teams in Europe currently. uh, प्रूव कर दिया, दोनों टीम ने भी प्रूव कर दिया। लिवरपूल ने प्रूव कर दिया विद द प्रीमियर लीग, with their status in the Premier League being one of, if not the most dominant faction in England, and Real Madrid, with the way they won the La Liga this season, absolutely rampaging through to that title. तो Real Madrid ने obviously prove ही किया कि how dominant they were in the La Liga circuit this time around. So a clash between two titans हमको देखने को मिला, and the titan uh, that emerged the winner was the one who has won the most number of European titles. 14th 14th time they have won a Champions League trophy. Crazy, yaar. I mean, if this doesn't solidify your status to be the best in Europe, all-time best in Europe currently, I don't know what does. I really don't know what does. Even if next year somebody else wins the trophy, it would be very foolish of us to probably say that wo hai best in Europe currently, because in my head I will still feel that Real Madrid is the best in Europe, because if beating that threshold that they have set for themselves in the Champions League, beating the threshold that they have set for others, benchmark that they have set for others in the Champions League, is kind of becoming next to impossible. But on paper, when you're taking the names of Atletico and AC Milan, they are very strong teams. I'm not undermining them, but when you're putting Liverpool against them, Liverpool are expected to beat them. But जब हम Real Madrid की बात कर रहे हैं, there are 4 teams here that they went on to beat recently. That is PSG, Chelsea, Champions League holders up until yesterday, मैनचेस्टर सिटी एंड नाउ लिवरपूल। इनमें से आपको कौन सा, मतलब कहाँ पर आप बोल सकते हो कि दिस टीम वाज द टीम दैट दे एक्सपेक्टेड टू बीट? 2-3 बार उन्होंने कमबैक, 3 बार इन्होंने कमबैक्स किया। इन द लास्ट 3 गेम्स दे मेड अ कमबैक। आप जब रियल मैड्रिड के लिए खेलते हैं, तो आप बस एक, आपकी टैक्टिकल प्रोफाइल को ही शायद नहीं देखी जाती है कि आपकी टैक्टिकल प्रोफाइल कैसी है। दिस इज द डिफरेंस दैट आई थॉट दैट वाज ऑन द नाइट। आपकी मेंटालिटी ओवर द होल ऑफ 90 मिनट्स देखी जाती है कि आपकी मेंटालिटी कैसी है। How does that match up to the opposition? Liverpool, don't get me wrong, are an excellent team of individuals. When I'm looking at when I'm looking at both sides on paper, as a collective, Real Madrid seem excellent. But if I'm looking at the strength of the individuals on paper on the Liverpool squad, they are
absolutely brilliant players. There are absolutely brilliant players. I would, I would do anything to have any, at least around 6 to 7 players from that squad in my squad. Like, I would do anything to have that. But the thing is, a collective always is a very important phenomenon, a very important thing in football. And I think the collective won in the end, because Liverpool did everything to actually come back into the game. They did almost everything to score that goal, to score that elusive goal, did everything. But as a collective, Real Madrid defended with their lives. ठीक है, yes, it was not an eye pleasing thing. ठीक है, अगर आप न्यूट्रल हो, आपको डेफिनेटली शायद ये मैच बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा, बट फॉर अ वेरी सीरियस फुटबॉल फैन, हम देख रहे हैं एक ऐसी टीम रियल मैड्रिड को जो इतनी पम्प्ड अप है, इतनी ज्यादा पम्प्ड अप है. आई रिमेंबर द सेव दैट, देयर वाज अ सेव दैट कोर्टुआ मेड, एंड उस पे जब सेव कोर्टुआ ने जब सेव, आई थिंक साला से ही सेव किया था, जब साला से सेव किया बाद बाद में सेकंड हाफ में पूरी टीम उस पे झपट गई, पूरी रियल मैड्रिड टीम कोर्टुआ पे झपट गई टू एक्चुअली कांग्रेचुलेट हिम एंड पंप हिम अप. दैट इज द, sometimes UA also did this last season. So I mean, these are things that I really like to see as a football fan, because this really makes me believe that this is a team which really wants to go all down, मतलब fully along the way, मतलब पूरा पूरा एंड ऑफ द लाइन तक जाना चाहती है. ठीक है, एंड कैसे भी करके उनको वो ट्रॉफी के ऊपर उनको अपना हक जमाने का है. उनको वो रिकॉर्ड्स की जो भूख है, वो रिकॉर्ड्स की भूख उनको चाहिए. और एक चीज जो है रियल मैड्रिड के बारे में जो बहुत इंटरेस्टिंग थी मेरे लिए कल, कि आप एम्बाप्पे के पीछे इतने पड़े थे, नॉट हो एनीमोर, पड़े थे. ठीक है, द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लूजिंग एम्बाप्पे कुड हैव हैड एन इफेक्ट ऑन दिस गेम, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अभी लोग बोले नहीं नहीं गुरुजी पागल हो गए हैं, बट हियर मी आउट. अगर आप आज हार जाते, ठीक है, अगर आप आज हार जाते, मैं आज ही बोलूंगा क्योंकि आज ही गेम हुआ, ठीक है, टेक्निकली स्पीकिंग फॉर ऑल इंडियन फैंस, इफ यू वुड हैव लॉस्ट टुडे, rival fans would have definitely proclaimed the fact कि एम्बाप्पे भी तुम्हारे हाथ से चला गया और चैंपियंस लीग ट्रॉफी भी तुम्हारे हाथ से चली गई. There, that is one thing that you would have heard, and you can't even deny it, because that's exactly what has happened. Now what you can definitely tell them कि तुमने चैंपियंस लीग ट्रॉफी जीती, बट दूसरी चीज तुमने जो की is the person who scored the winner. The person who scored the winner, and the person who's probably going to win the Ballon d'Or, in my books, probably going to win the Ballon d'Or through this Champions League final key victory. The person who scored the winner, Vinicius Jr., first South American player since Lionel Messi in 2008-09 to be directly involved in more than 10 goals in a single Champions League campaign while age 21 or under. And yes, the match winner in a Champions League final tonight. एथलेटिक यूके के एक ट्वीट से मैं पढ़ा है, मैंने अभी अभी पढ़ा है, बट दैट इज द, क्या बोलते हैं, दैट इज द माइलस्टोन दैट दिस किड हैज अचीव्ड. व्हाई डज इट कंपेयर टू एम्बापे? Because this kid is playing in the left wing. If Mbappe would have come into your picture, he would have played on the left wing. आप बोल रहे हो नहीं नहीं वो सेंटर फॉरवर्ड भी खेल सकता है, चलो सेंटर फॉरवर्ड खिला देते. Benzema will probably win the Ballon d'Or through this Champions League final win. Do you still need Mbappe? Do you still need Mbappe at least in next year? Do you still need Mbappe? चलो वो कोई बोलेगा राइट विंग पे खेल देते, राइट विंग पे खिला देंगे. Rodrigo has been immense in this Champions League season, in this champion for Real Madrid to come to the Champions League final. The recent run of games that Rodrigo has had in the Champions League has been brilliant. How does it justify to displace Rodrigo in this current run of form by an Mbappe? But in my head, I'm obviously sold on the fact that he would have come as a left winger, or he would have come as a center forward. But with the performances that both of them gave yesterday, and with the fact that there was a match-winning goal, that the left winger, like a Vinicius, scored a match-winning goal yesterday, just cancels out the whole Mbappe debate. And you can probably go back and tell them that, hey, Mbappe aane wala tha, look at this result, 1-0 Vinicius, goal scorer Vinicius. कौन से विंग पे खेलता है? लेफ्ट विंग. बूम ऑन योर फेस.
That is something that you can definitely, Real Madrid fans, if I was a Real Madrid fan, I would have done that already. But I'm just giving you an idea for all those Mbappe scenes that are being thrown your way right now, because now you have effectively proven that probably don't need him. Everton से रियल मैड्रिड आके जब ट्रांजिशन सीजन होने वाला था, ये कार्लो एंcelotti के ऊपर इतने क्वेश्चंस आए थे, इतने सारे क्वेश्चंस आए थे कि आप एवर्टन से कैसे लेके आ सकते हो, मतलब मिड टेबल साइड, टॉप हाफ ऑफ द प्रीमियर लीग में भी, मतलब मर मर के आ गई, ठीक है। बट आप कॉन्टेक्स्ट पे देखो, एवर्टन को उन्होंने 10th लेके आया, अभी एवर्टन से चले गए, immediately after that Everton are now celebrating because they have fought off relegation. The depths to which that club has fallen. Now, Carlo Ancelotti, that's one case. Second case is Carlo Ancelotti comes to Real Madrid. Real Madrid is an absolute disarray when it comes to funds, when it comes to transfer funds. It's supposed to be a transition club, because this year was supposed to be a transition year, so that next year you could actually build up the funds, because transfer market पे आपने बहुत सारे प्लेयर्स को ऑलरेडी आपने शन कर दिया था, बहुत सारे प्लेयर्स को, और आप उनमें से बिग मनी साइनिंग्स भी थे, जैसे ईडन हजार्ड भी थे, लुका जॉविच हैं, ये सब लोग ऑलरेडी, मतलब आपने ईयर मार्क कर दिया कि ये सब लोग शायद ही रियल मैड्रिड के लिए और ज्यादा खेलेंगे। तो जो भी ईडन हजार्ड ने पब्लिक इंटरव्यू में बोला है कि आई नीड रियल मैड्रिड मोर देन रियल मैड्रिड नीड्स मी, वैसे करके जो भी बोला है, बहुत अच्छी बात है। बट इट्स नॉट फॉरेन कि भाई, मतलब जब फ्लोरेंटिनो पेरेज ने इनको लेके आए थे, उस टाइम पे उनको बोला था कि भाई ये सब प्लेयर्स को हमको बेचना है ताकि हम फंड्स लेके आ पाए एम्बापे के लिए। एम्बापे तो नहीं आया, ठीक है, एम्बापे तो नहीं आया, वही डिसअपॉइंटमेंट। दूसरा डिसअपॉइंटमेंट ये हुआ जब आप, जैसे मैंने बोला कि आप टीम शीट को देखते हो, आप टीम शीट है कलेक्टिव इंडिविजुअल्स की टीम शीट है, आपको कोई ऐसे बड़ा गैलेक्टिको नहीं दिखता है, ठीक है, आपको ऐसा कोई भी बड़ा गैलेक्टिको नहीं दिखता है। ऑलराइट, फॉलोन मेंडी, एडम मिलिटाओ, थिबो कूटवा भी, जब सीजन शुरू हुआ था, उसके सीजन शुरू होने के पहले थिबो कूटवा had a lot of doubters in the Real Madrid setup as well, and in the European footballing European footballing scene as well. So there were still a lot of doubters for Thibaut Courtois because of some of his mediocre performances in the last season. तो ये पूरे की पूरी पिक्चर थी रियल मैड्रिड की, पूरी की पूरी पिक्चर थी। वी वर क्या बोलते हैं, ला लीगा सीजन के लिए हम फेवरेट्स मान रहे थे एटलेटिको को, एटलेटिको तो आसपास भी नहीं थी, ठीक है। दिस इज व्हाट कार्लो एंcelotti डिड। कार्लो एंcelotti केम इन एंड डिड द बेस्ट विद द रिसोर्सेज दैट वर गिवन टू हिम। कौन आया ट्रांसफर मार्केट में, कौन आया? दाऊद अलाबा, बस। और कौन आया? if I missed any other name, please do let me know who is in the first name team, who is in the first team। कौन आया? बस दाऊद अलाबा, और कोई नहीं आया। It's as simple as that। he 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 with that particular team, and with the fact that he probably didn't do jack shit in the transfer market, he became the first manager to win the league in 5 different countries with the La Liga season win, and he became the first manager to win 4 Champions League titles। सो आपने एवर्टन का तो मैंने वो एग्जांपल दिया ही कि वो 10th थे जब कार्लो एंcelotti छोड़े, और अभी वो रेलीगेशन से फाइट करके वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। दैट इज अ ह्यूज अकम्प्लिशमेंट फॉर कार्लो एंcelotti एंड रियल मैड्रिड। फर्स्ट मैनेजर टू विन 4 चैंपियंस लीग टाइटल्स, फर्स्ट मैनेजर टू विन द लीग इन 5 डिफरेंट कंट्रीज। क्रेजी भाई। एंड उसके ऊपर ही इज प्लेइंग विद दीज कोर क्रक्स ऑफ प्लेयर्स, जो आप शायद बोल रहे हो कि दे आर पास्ट देयर प्राइम, ठीक है, या दे आर एजिंग, ये सब चीजें के बारे में बोल रहा हूँ, जो है करीम बेंजेमा, लूका मॉड्रिच, डानी कार्वाहाल, मार्सेलो शायद ही कभी खेले, मार्सेलो, गैरेथ बेल और इसको शायद ही खेले, ठीक है। बट मैंने ये सबके नाम इसलिए लिए हैं बिकॉज ऑल ऑफ देम have won 5 Champions Leagues. That is a joint record. Only Real Madrid legend Paco Gento has won more. I mean, यही सब चीजें जो हैं, आप यू पुट इट डाउन इनटू द मैनेजर एज वेल। फाइनल के बारे में भी स्पेसिफिकली बात कर ले, क्या टैक्टिक थी वो फाइनल के लिए, जो मैंने सब पॉडकास्ट पे पहले से ही बोल के रखा था। टैक्टिक ये थी कि आप अब्सॉर्ब करो प्रेशर को, ठीक है, आप अब्सॉर्ब करो प्रेशर को, एंड लेट लिवरपूल कम ऑन टू यू, लेट लिवरपूल कम ऑन टू यू, आप अब्सॉर्ब करो प्रेशर को और काउंटर पे खेलो,
ठीक है, उनके उनकी लाइन को और ज्यादा आगे आने दो, उनकी उनके डिफेंडर्स को और ज्यादा सोचने दो कि चलो अर्जेंसी उनके डिफेंडर्स के अंदर, उनकी टीम के अंदर और ये अर्जेंसी डालने दो कि भाई आपको गोल चाहिए, ताकि जब आप काउंटर करो तो उनकी वो उनकी सोच जब जब तक बदलेगी कि भाई डिफेंसिव ट्रांजिशन चल रहा है, हमको अभी वी हैव टू रीऑर्गेनाइज, जब तक वो ये सोच पाए तब तक आप एक गोल मार दो। और शायद ही ये हुआ है, क्योंकि वाल्वर्डे का लो ड्रिवन पास, एंड जब ब्यूटीफुल वाल्वर्डे का लो ड्रिवन पास, एब्सोल्युटली सम्पचुअस लो ड्रिवन पास, बट जब आप ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को देख रहे हो, ही इज माइल्स अवे फ्रॉम विनिशियस, ही इज माइल्स अवे फ्रॉम विनिशियस। इट विल आल्सो, पीपल विल आल्सो टॉक अबाउट द फैक्ट कि भाई ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड की डिफेंडिंग सही नहीं है, बट हाँ वो तो सही नहीं है, बट आप इसके साथ भी एसोसिएट करते हो ये बात कि ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड के ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी कि आप आगे जाके आप सपोर्ट कर रहे हैं अटैक को, और आगे जाके आप इन्फ्लुएंस करें साला को, या इन्फ्लुएंस कर अपनी होल टीम को, कि ताकि वो एक गोल मार पाए, कि जब तक वो पीछे आए तब तक उन वो अपने अपने दिमाग को ही रीऑर्गेनाइज नहीं कर पाए, अपने आप को ही रीऑर्गेनाइज नहीं कर पाए टू प्रॉब्ली बी अवेयर ऑफ the to be aware of his defensive responsibilities at that particular point of time. Every top player should be able to do that, but in some big occasions, in these big occasions, sometimes a player isn't able to do that because of the urgency with which he has to do one particular job. The second particular job takes a back seat, and that backseat जो ली जो second particular job ने Trent Alexander-Arnold की, that proved to be his fatal wrongdoing, that proved to be Liverpool's fatal wrongdoing, because मैंने भी यही चीज मैंने वॉच अलॉन्ग पे एक बोली थी कि अगर अगर रियल मैड्रिड ने पहला गोल ले लिया, अगर रियल मैड्रिड ने पहले गोल ले लिया, आई थिंक दे हैव द अपर हैंड, बिकॉज उसके बाद आई हैव नोटिस्ड कि भाई वो गेम मैनेजमेंट भी करते हैं, वो बहुत अच्छी, मतलब इन टर्म्स ऑफ अ कलेक्टिव दे रियली परफॉर्म वेल। पास 3-4 गेम से आई थिंक यही मोस्टली यही टैक्टिक रहती है। ये ओनली थिंग दे चेंज्ड अबाउट वाज अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, जहाँ पे फ्रंट लाइन प्रेस थोड़ा सा और एक्टिव कर रहे थे, बट जब तक मैनचेस्टर सिटी उनके मिडफील्ड तक आ रही थी, फिर वो वापस मिड ब्लॉक या लो ब्लॉक पे आ जा रहे थे। तो this was very common. I this was a very predictable tactic from Real Madrid. But sometimes a predictable tactic really does win you games if you have enough faith on your players, and that is where I will credit Carlo Ancelotti, because he had a lot of faith on his players to pull off such a risky move when it comes to Liverpool. To pull off such a risky move of soaking up Liverpool's pressure from both wings, and then trying to release Vinicius on the left wing especially. So बहुत risky move था ये, but almost every player stepped up to the plate. I mean, yes, it was an inspired performance from Thibaut Courtois. बट थिबो कोटा ने भी अपना मतलब जो पोस्ट मैच इंटरव्यू दिया उसमें भी थोड़ा सा मतलब शैतानी कर दी, स्पेशली इन इंग्लैंड बोल के। ठीक है, वो शायद बोलना नहीं था, बिकॉज आई वाज जस्ट गोइंग टू like really praise Thibaut Courtois. वो as a Chelsea fan, I really didn't like that last edition in the post match interview. थोड़ा सा मतलब देख लिया है हम पे, पर if I just talk about the night, he was absolutely special. Somehow as an aspiring goalkeeper, I really feel blessed to see that performance. बट मैंने बहुत बात कर ली, आई थिंक मैंने रियल मैड्रिड के बारे में। थोड़ा सा मैं लिवरपूल को टच करना चाहूंगा, क्योंकि लिवरपूल फैंस, इफ यू स्टिल वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज नोट दैट यू स्टिल द बेस्ट टीम इन इंग्लैंड. 1 point doesn't really define you. ठीक है, I would still consider Man City and Liverpool to be at an equal standing in England. आप आप 3 UCL फाइनल्स में गए हो इन द लास्ट 5 years. That is a huge accomplishment in itself. If I would want to be in the shoes of a Real Madrid fan right now, I would also want to be in the shoes of a Liverpool fan right now, because these are the things that I would want my club to have as well at some point of time. I would want Chelsea to go into 3 UCL finals in the last 5 years. I would want Chelsea to be an English superpower, to be very honest. So this is something that I would also want to do. So you are still the क्या बोलते हैं, the apple of a lot of people's eyes. तो वो चीज अभी भी आप हो, आपको लोग अभी बहुत एडवियस तरीके से आपको देखते हैं। ठीक है, तो आप दिल छोटा ना करें। ठीक है, देयर इज हार जीत इज देयर इन एवरी गेम। किसी को तो हारना था आज, किसी को तो हारना था।
अगे अभी अगर रियल मैड्रिड हार जाती तो थोड़ी ना रियल मैड्रिड एक छोटी टीम बन जाती। बट एक चीज है कि यू आर नॉट, ये जैसे मैं बाबा के साथ भी बात, बाबा ने चीज बोली थी और आई काइंड ऑफ अग्री विद हिम, बिकॉज you are not against the world. The world loves you, Liverpool fans. The world loves you. It's अगर मैंने प्रेडिक्ट की रियल मैड्रिड की विन आज, ठीक है, it's not like I didn't want you to win. It was just an it was just an honest prediction that, considering circumstances, I thought that Real Madrid has it in themselves in terms of mentality. I thought they really do pip you in that sense because ट्रस्ट मी, आपने भी आज देखा होगा कि आप जब वन गोल डाउन हो गए, थोड़ी आपके अंदर एक हाराकीरी आ गई व्हेन इट कम्स टू गेटिंग दैट गोल, ठीक है, टू व्हेन कम्स टू गेटिंग दैट इक्वलाइजर, थोड़ी सी एक हाराकीरी आ गई। इफ नॉट फॉर दैट इंस्पायर्ड परफॉर्मेंस फ्रॉम Courtois, maybe you could have got that goal as well, but you also know there was मतलब थोड़ी सी एक डिस्ट्रॉट वाली फीलिंग आ गई, थोड़ी सी आपके शोल्डर्स नीचे हो गए, ठीक है, मैन आई थिंक 78 मिनट मार्क या 75 मिनट मार्क पे आपके थोड़े शोल्डर्स नीचे हो गए। तो आपने ये सब चीजें देखी थी आज आपके प्लेयर्स के अंदर, बट Fickle not, guys, because I think there's always another night in the Champions League. I'm pretty sure that you will go far in the Champions League next season as well with the squad that you have, because the squad is crazy. If Luis Diaz would have had a great क्या बोलते would have had a great game, this could have been a completely different picture. But Luis Diaz didn't have a great game because if Dani Carvajal was bombing forward, there was Fede Valverde who was covering, and Luka Modric was doubling up as that क्या बोलते हैं, as a left center back. डबलिंग अप भी क्या मतलब, ही वाज मतलब थ्री मैन सेंटर बैक में लुका मॉड्रिच लेफ्ट सेंटर बैक खेल रहे थे। आई मीन दीज वर सम थिंग्स दैट, एंड हम देख रहे थे लुइस डियाज इज गोइंग 1v1 विद लुका मॉड्रिच, एंड लुका मॉड्रिच वाज बीइंग एन एब्सोल्यूट सुपर पावर देयर, अंडररेटेड, वेरी अंडररेटेड player yesterday night, but Luka Modric has did a killer job yesterday. So Liverpool fans, you would not expect that Luis Diaz would go 1v1 with Luka Modric and Luka Modric would do really impressively in that context. यही सब चीजें थी जो आप शायद ही ना एक्सपेक्ट कर पाए, पर it has been an absolute roller coaster of a season for you. Plus 55 goal difference in the Premier League. जब आप Premier League जीते थे, आपकी plus 44 goal difference थी, तो it has been all round. It has been a very very good season. So you played 63 games this season. It is an absolutely मतलब massive achievement. बहुत लंबा calendar था, and you just look tired by the end of the game, and it was very evident. क्यों नहीं होंगे आप भी, वो भी एक चीज है, क्योंकि आप जब रियल मैड्रिड को देखेंगे, रियल मैड्रिड had closed the title 1 month before this game, ठीक है, पर आपने अपना टाइटल को जीता, ला को मतलब जीता नहीं, बट अपने अपने प्रीमियर लीग टाइटल को लास्ट डे तक मतलब आप खींचते गए। तो आपने नहीं खींचा, बट प्रीमियर लीग टाइटल आपका खींचा लास्ट डे तक। तो प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग इन विथ माय वर्ड्स, बिकॉज मैं थोड़ा सा अभी नींद में हूँ और मैंने बहुत चीजें बोल दी है, तो थोड़ा मैं भी अभी थक गया हूँ। बट यस, आई मीन लिवरपूल फैंस, डोंट बी डिसहार्टेंड। 63 गेम्स, 2 कप्स, एक फाइनल आपने आपने हारा और 1 पॉइंट से आप लीग हारे। This is If this is not an impressive season, then I don't know what is. Titles don't really define you in every sense. If titles did define you, then Manchester City would still not be considered an impressive side in Europe. They're still considered an impressive side. Don't count me wrong. They are not considered a dominant side in Europe. They are considered an impressive side in Europe. So you are still, in a way, this was still a very impressive season for you. You had very few defeats this season. This is one of them, but you have had very few defeats this season, to be very honest. So please hold your head high, because you have got amazing players. अब तो माने ने भी बोल दिया कि भाई अनफिनिश्ड बिजनेस है, तो माने भी रहेगा आपके साथ ही, ठीक है, साला भी शायद आपके साथ ही रहेगा। तो आपके जो क्रक्स ऑफ प्लेयर्स है वो भी आपके साथ ही रहेगा, एंड इस क्रक्स ऑफ प्लेयर्स के साथ कैन गो you can go far, and you can win the Champions League title next season as well, with the way you have been playing, to be very honest. So that was it from my end, guys. बहुत सारी चीजें बात कर ली, बहुत सारी चीजें मैं बोल भी सकता हूँ, to be very honest, but I think मैं रात को एक लाइव करूंगा, मेरे जो YouTube के दोस्तों के साथ, थोड़े दोस्तों के साथ मैं एक लाइव करूंगा, उसमें हम अपने जो ओपिनियंस है वो बयां करेंगे। एंड पर अब तक के लिए आई थिंक दिस वाज अ वेरी गुड लेंदी वीडियो अबाउट रियल मैड्रिड एंड लिवरपूल। सो
crazy final, guys. Thank you for to both teams for actually putting up that final. Thank you to both sets of fans, um, for being an absolute joy to talk with, because मैंने बहुत दोनों sets of fans के साथ बात की, for being an absolute joy to talk with, and to all of the fans who have supported this channel, and to all of the fans who have supported our YouTube के दोस्तों को over the past फुटबॉलिंग सीजन, बिकॉज अब तो यूरोपियन फुटबॉलिंग सीजन, टॉप डिवीजन यूरोपियन फुटबॉलिंग सीजन खत्म हो गया है. So it was an absolute pleasure to cover this European footballing season, and I wish that World Cup में भी ऐसी coverage मैं कर पाऊँ, क्योंकि World Cup is going to be really special for me, क्योंकि मैंने फुटबॉल ही स्टार्ट किया था देखना by actually supporting France in the 98 World Cup. So I think it's going to be a very very special thing for me. So उसके लिए शायद मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ. But yes, this was an amazing roller coaster of a season. This was an amazing roller coaster of a season to cover. And thank you to all for watching. So guys, well, we'll definitely meet you in the next video. तब तक अपना ध्यान रखें, और तब तक जो भी फ्लैग आपको उड़ाना है, तो प्लीज अच्छे से उड़ाएं. All right, peace, boys.